वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वीम टेल्स। ये तो देख के ही पता लग गया कि हम लोग कहाँ पे आए हुए। इट्स अ प्लेजर टू हैव आदित्य सर टुडे, सो कम लेट्स सी। बहुत लोगों ने मेरे को पहले बोला यू नो देयर इज अ फैसिनेशन टू सी आईएस बंगलो, क्या होता है। कम लेट्स सी। हाय सर, thank you so much sir. So how your day starts like? My day usually starts early in the morning at around 6. Then I engage in some exercises, and as far as the work is concerned, so it's uncertain. You can get work related calls right from early in the morning itself. Usually in the state of West Bengal, the working hours are 10 to 5:30. So my work starts at around 10. That is the time I go to my office, and then meetings, visiting people. There are visiting hours up to 12:30, so people with their problems or disputes, they come to meet me. And post that there are certain field visits, then there are certain meetings, and office planning, regular office work, those files need to be cleared. And on an average the day ends around 7:30 हो ही जाता है. अच्छा, तो आपको तो देख के सर अभी भी लगता है यू आर स्टिल फिट एंड ट्राइंग टू कीप दैट थिंग, है ना? तो अभी भी फुल एवरीथिंग एक्सरसाइज वगैरह आप करते हो? I tend to do that. Because I have that need of staying fit and working out, and there's that daily dose of endorphins. It's good for the whole day. So I try to get it early in the morning. मैंने अभी पीछे देख रहा था, देयर इज आई थिंक बास्केटबॉल ग्राउंड, सो यू प्ले? It's a badminton court. Sorry, badminton. You play badminton? Yes. Yeah, I play whenever my family or somebody visits. Okay. We make it a point to have a game or two there. Somewhere do you feel like waking up early in the morning? मुझे नहीं पता ये सवाल मेरे को करना अच्छा है कि नहीं, क्योंकि I don't look like a fitness freak. But then also, ये early in the morning exercise helps to go through the day. Like it helps you in that motivated. Yes. I have personal experience that whenever you start your day early in the morning, as early as possible, it is the best. So let's say if you are able to start it at 5, nothing like it. So you get some space where there is no commotion, and you can plan your day. Then you can devote some time for your personal growth. That may be exercise, that may be reading, learning to play an instrument. And then everything is done, and you still have an hour or two left with you, and then your office starts. So you have got a very great head start on a day. So that adds to your efficiency throughout the day. Definitely. Thank you, sir. I think you're also getting late. Let's Yeah. start.
কাঁথি মহকুমা শাসক আদিত্য বিক্রম হিরানি আইএএস। আমি আজকে এখানে আসার মূল যে উদ্দেশ্য ছিল এটা আমি এদেরকে ধন্যবাদ জানাতে এসেছি। তারা এখানে এসে যে দেখছি কি আপনারা ভ্যাকসিন নিচ্ছেন, ভ্যাকসিনেশনের পর আপনারা এখানে আপনাকে মনিটরিংয়ে রাখা হচ্ছে। আমি খুব গর্বিত যে আপনার সাথে এটা আমি শেয়ার করতে পারছি যে কাঁথি মহকুমা গোটা ডিস্ট্রিক্টে, গোটা জেলায় প্রথম জায়গায় আছে আর গোটা রাজ্যে খুব ভালো জায়গায় আছে কোভিড ভ্যাকসিনেশন নিয়ে। আর এর মধ্যে প্রথমত তো শ্রেয় আপনাদেরকে দেওয়া হবে, কাঁথির লোক যারা এগিয়ে এসে ভ্যাকসিন নিয়েছে। কিন্তু এই কর্মকাণ্ড যেটা চলছে এতদিন ধরে এটা সাকসেস হতো না যদি লায়ন্স ক্লাবের মতো স্বেচ্ছাসেবী সংঘ এগিয়ে না এসে এই উদ্যোগটা নিজের এই প্রস্তুতিটা নিত। তাহলে আজ আমি যখন জেলায় যাই আর আমি যখন শাবাশি পাই এই কাঁথি মিউনিসিপ্যালিটি খুব ভালো কাজ করছে, তাহলে আমার এটা নৈতিক কর্তব্য হয়ে যায় যে আমি এখানে এসে যারা অ্যাকচুয়ালি কাজটা করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আর আমি মানে হৃদয় থেকে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই হাততালিটা লয়েন্স ক্লাবের মতো লয়েন্স ক্লাবের বিভিন্ন শাখা, আমাদের রোটারি ক্লাব, আমাদের ইউপিএলসি, এরা সব প্রস্তুতি নিয়ে খুব ভালোভাবে আপনাদের মধ্যে গিয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মিশে লোকেরকে সচেতন করে এখানে ভ্যাকসিনেশনকে সফল করেছে। আর এই জন্যই আমি এখানে এসে আমি ভাবলাম যে এখানে এসে জায়গা উপরে গিয়ে ধন্যবাদ দেওয়াই উচিত, কারণ যে প্রশাসনিক যে কাজ আছে ওর মধ্যে ইনি এগিয়ে এসে সহায়তা করেছে। আর আমি আশা করছি যে আগামী পরবর্তীকালে যেটা আমরা আরও অন্যান্য প্রস্তুতি নেব ওর মধ্যে লায়ন্স ক্লাব আর লায়ন্স ক্লাবের বিভিন্ন শাখা আমি সহযোগিতা পাবো। तो सर मैं फर्स्ट टाइम एक फील्ड विजिट में आपके लिए मौका मिला देखने के लिए क्या होता है। सो आई सॉ इट्स अ वैक्सीनेशन कैंप गोइंग ऑन, तो इफ यू कैन जस्ट ब्रीफ मी व्हाट इट वाज। It was a vaccination camp running in the municipality area. The municipality area is looked after by the subdivisional officer of that subdivision. So it was a camp run by the Lions Club, and these guys they have been incessantly vaccinating many people, going door to door, making them aware of the benefits of vaccination. And because of their collective effort, we have been able to get the highest rank in number in urban vaccination. So it was a matter of pride for both our district and my subdivision, and hence I visited their camp and congratulated them for their efforts. सर ये तो एक हो गया आपके प्रोफेशनल पार्ट है ना, बट आई वांट टू आस्क अबाउट योर चाइल्डहुड, हाउ इट ऑल स्टार्टेड, लाइक वाज इट अ चाइल्डहुड ड्रीम? Yes, I would say it was a childhood dream. Because of our family profession, my father used to, he was required to go to the district collectorate often for getting one permission or the another. So he had his brush with a lot many IAS officers, and then at that point of time, I'm talking about early 90s, he was mesmerized by the profession that it was, and hence my upbringing, I grew up hearing these stories of this IAS officer does this IAS officer has done this. So essentially it was drilled down right from the childhood, and then I also made my studies and all, and then found it's a very good career option if you are socially inclined and you enjoy being among the people. The way you were describing, मुझे सुन के लगा कि it was a dream for you. So now we can say, like, are you living that dream? Yes, of course. Getting into the IAS is
not that an easy job in the present situations, because the competition has increased. There is some 0.001% chance of getting cleared. So if you are getting into that list in the top 100, then along with your hard work and motivation, your luck also has to do. And I am grateful for my stars for bringing me here, and I'm fulfilling my dream to act as an instrument of the state which is engaged in fulfilling the dreams and wishes of the common people of India and West Bengal. You said a word that you are working as an instrument of a state, right? So, due to our social media platforms, a lot of times we see a glorified or a glamorous life of a bureaucrat. Do you think, I want to ask in that perspective, sometimes we get attracted to the glamour but not seeing the real world? Is it like that, or is it sometimes different, or rather we shouldn't go into that glamour? To those who are attracted to the services just by the glamour of it, I would say it's getting attracted towards the iceberg by just seeing the tip of it. Yes, the service does come with its perks and privileges. The service, the Indian administrative service in the country is a very, very highly respected job. So but that is not the whole of it. The amount of actually the job entails a lot of public interaction, a lot of creative thinking, and a lot of application of mind in the social sphere. So I think that if a person has a calling for these things, then that person is best suited to prepare and come into the services, so that he can contribute his 2 cents. He or she can contribute his or her 2 cents in the upbringing of the development of the people. आपने क्रिएटिव चीज़ की बात की तो बहुत लोग हैं तो मिस कर गया, बट आई वॉज देयर विथ यू इन द ऑफिस फ्रॉम द मॉर्निंग, सो आई सॉ सेवरल पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, समटाइम्स फ्रॉम द पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स कोटा, ऑल्सो पीपल लाइक दैट. तो मैंने एक चीज़ महसूस किया आपके वहीं पे बैठ के देख के, that connecting the right dots plays an important role in this profession. So what will be your tips to upcoming bureaucrat to see it? The All India services and the IAS and IPS, they place an officer at a very lower age at a chair which has the main function of a supervisory and monitoring role. So essentially we are not the ones who do the legwork. So as a sub-divisional officer or a sub-divisional police officer, our job is to move the right people in the right direction, map our resources, make optimum use of our resources, and then channelize and coordinate among various things so that the best output comes out. Essentially, you need to have a vision, and this is what I want for my jurisdiction, and then you have your resources, and then you chart out a plan. This is how I'm able to I'll be going ahead with the things. So as you said about mapping, मुझे ये वाले पॉइंट पे बहुत क्यूरियोसिटी रहता है कि there's a term called human mapping. Okay, like you know that better, right? So जैसे सर आप जब मिलते हो, आपको अब कैसे पता लगाते हो कि इसको अगर ये काम दूंगा ना तो ये बहुत अच्छा करेगा, इसको शायद ये नहीं दूंगा तो नहीं कर पाएगा. वो जो चीज़ होता है ना, बट ऑल द टाइम यू कैन नॉट गेट थ्रू एक्सपीरियंस, बट समटाइम्स यू नीड टू डू इट पर्सनली. सो हाउ डू यू टेल दैट? I think this particular thing cannot be taught. It comes out of experience of life. Usually 22 से 30 साल के बीच में the maximum number of civil servants get into the services in this age range. So whichever office you hold, firstly तो हर एक ऑफिस का अपना एक institutional memory होता है. So essentially you will be able to know who's who and किसका capacity कितना है. On top of that, when you apply the 80-20 principle there, 20% people will be doing 80% of your job. So आपको वो पहले 7-10 दिन में ही पता चल जाएगा कि कौन से वो लोग हैं, those who are working, those who are diligent, and those who are efficient, and those who are not, they themselves will, मतलब I'll call it an automatic filter. Okay. अपने आप ही filter हो जाते हैं.
And then you plan to map your resources accordingly. Then आप फिर you'll have to, as a office master, you'll have to carry everyone with you. So those who are not capable, they have to be trained. Those who are not willing, they'll have to be motivated or nudged in the right direction. And those who are willing, their best performance needs to be taken out. So this is essentially the job of an office master. So as like being an SDO, you also need to look into districts, right? So जब आप सर पहली बार इधर आए हो, like born and brought up in what I know, like you in Maharashtra, then coming to Bengal, तो इसके culture ये सब वो dialects, क्योंकि मैंने सुना हो you speak the Bengali the way a Bengali guy speaks, तो वो dialect फिर कैसे catch किया? Any non-Hindi speaking state, for every officer going there, it is a must to have a knowledge of the local language. And yes, we get trained in our academy in the alphabets and all, but the spoken aspect of a language can only be learned by going among the people. आप उनमें जाके ही सीख पाएंगे. So during my probation, I made it a point that whosoever speaks to me, he or she speaks to me in Bangla only, even though I don't understand, and I would try to speak to them in Bangla, which was hilarious at many times. But then that phase thankfully was very short, and I was able to catch up quickly. And that is because essentially our first initial postings are in the rural areas. We deal with the rural people, those who do not know even Hindi. English तो दूर की बात है. So then if you do not understand the local language, then how do you understand their dispute, how do you understand their problems, and how do you offer them solutions? So local language is a major part of administration. तो एक लास्ट क्वेश्चन बांग्ला में पूछता हूँ. सो पीपल डोंट नो बंगाली, ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं कोशिश करूँगा सबटाइटल दे देने के लिए. প্রশ্নটা এরকমই থাকবে স্যার কি যে পুরো দিনের একটা প্রসেস চলে, হ্যাঁ না, ভাগাদৌড়ি, ফের টেনশন, স্ট্রেসড আউট থাকে, বাট হাউ ইউ ট্রাই টু টেক আউট ইয়োর পার্সোনাল টাইম? আমার জন্য পার্সোনাল টাইম বের করা অ্যাকচুয়ালি স্ট্রেস আর টেনশন, আমি ভাবি কি এই সব তখন আসে যখন যে জবে যে জায়গায় আপনারা আছেন সেই জায়গা ইজ নট ইয়োর ফার্স্ট চয়েস. যদি আপনি যে কোনো কাজটা করেন না কেন, যে কোনো কাজে আছেন, যদি সেই কাজটাকে খুবই মন দিয়ে ভালোবাসা করে আপনি করেন, তাহলে আমি ভাবি কি এভরিডে ইজ এ হলিডে. ইট ইজ অ্যাজ ইফ এভরিডে ইজ এ সানডে ফর ইউ. সো আর্লি মর্নিং যদি অফিস যাওয়ার জন্য একটা উৎসাহ থাকে, আই থিঙ্ক আপনারা মানে ইউ আর অন দি রাইট ট্র্যাক. আর এর সাথেও অফিস টাইমিংসের পর অনেকবার মানে হবিসগুলো কাল্টিভেট করতে হবে, সেই হবিকে নার্চার করতে হবে, আর সাথে সাথে সময় বের করে বাড়ির লোকের সাথে কথা, এইসব দিজ আর দি স্ট্রেস বাস্টার্স. এইসব দিয়ে যদিও কোনো স্ট্রেস এসে যায় তাহলে এটা দিয়ে আমরা তাকে ভেন্ট করি. I don't think after listening to this nobody will believe that you were born and brought up in Maharashtra. The beautiful way you spoke Bengali. Okay, so we're going somewhere else. We'll see you there. Bye bye. तो एक बहुत ही अच्छे इंसान से हमारी मुलाकात हुई है जो सर के साथ करीब 2 साल से है, ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं. तो वेलकम. आपका नाम? मेरा नाम भगीरथ शील. तो आप सर के साथ कितने दिन से हो? 3 साल हो गया. 3 साल. हाँ. तो आपने तो अगर पूछूं मैं सबसे क्लोजली देखा ना एक एसडीओ की लाइफ क्या होता है, एस ऑफिसर्स की, तो कैसा रहता है, मतलब जो ऑफिस घर पे सिचुएशंस कैसे रहते हैं? बहुत ही अच्छा है सर, तो बहुत ही शरीक और नेक इंसान है, लेकिन हमको बहुत ही अच्छा लगता है सर को, बहुत ही अच्छा लगता है. मेरा लाइफ में पहली बार ऐसी सर को देखा जो इतना अच्छा, इतना नेक, इतना शरीफ. चलो थोड़ा चलते. हाँ, कोई बात नहीं, चलिए. और मैं इनके साथ रहता हूँ 3 साल हो गया मेरा, लेकिन मेरा बहुत करीब सर मुझको बहुत प्यार करता है. हाँ. बहुत ही अच्छा लगता है हमको. और वो सर जब हमको जो बोलेगा मैं वो काम करता हूँ सर के साथ. अच्छा. तो आप तो बंगाली हो, ठीक है, तो मुझे लगता है सर को भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिला होगा ना बंगाल समझने के लिए, लैंग्वेज. सर के साथ हिंदी में बात कर रहा था, तो सर हमको बोला हिंदी में नहीं, तुम हमको साथ बंगाल में बात करो,
क्योंकि हम बंगाल सीखेंगे। लेकिन सर हमके साथ बंगाल में बात करते करते सर मेरे मैं क्या बंगाली बोलूं, लेकिन मैं सर को मैंने देखा सर बहुत अच्छे से बंगला में बात सीख गया। बहुत अच्छे से बंगला बोलता है। जब कोई किधर जीत जाता है कोई काम फाम करने के लिए, लेकिन सर इतना अच्छा बांग्ला बोलता है जो हम भी इतना अच्छा नहीं बांग्ला बोलती, सर जैसे बांग्ला बोलता है। आपको पता है, आप मुझे नहीं पता आपको कितना पता है कि आप कितने लकी हो, इसके लिए बता रहा हूँ मैं। जितने भी लोग बच्चे आज के जनरेशन में वो प्रिपेयर कर रहे हैं ना खुद को IAS IPS बनने के लिए, उन लोगों के लिए एक भगवान दर्शन जैसा है इन सारे ऑफिसर्स के साथ रहना, और वो आप इतने साल से रह रहे हो, तो मतलब उन लोगों के लिए ना आप बहुत ही लकी। मैं बहुत ही लकी इंसान हूँ। भगवान खुद आकर कोई काम नहीं करता, लेकिन मेरी तकदीर से ये सर हमको मिल गया। ये मेरा भगवान जैसी है। मैं इसको हर दिन सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक मैं इसको भगवान मानती हूँ। ये मेरा भगवान है और कुछ नहीं हम इसके बारे में बोलूँगी, लेकिन इतना अच्छा लगता है हमको सर को। मैं बहुत खुश हूँ। भगवान से मैं बहुत दुआ मांगूंगी ये सर के साथ, सर जितनी जो भी जगह में जाएगा मैं सर के साथ जाऊंगी। यही मेरा मेरा मन का इच्छा। सर मुझको बहुत प्यार करता है, बहुत। ये मेरे लिए भगवान है।